Dear students, in this video lecture we are going to talk about introduction of classical macroeconomics, and basically we'll be talking about determination of income and employment under classical macroeconomics framework. So whenever we talk about macroeconomics, there are two basic distinctions: classical macroeconomics and Keynesian macroeconomics. Although in recent days there are some other classifications as well, like for example monetarism, neoclassicals, neo-Keynesians. So अभी हम उन क्लासिफिकेशंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जो तो ब्रॉड क्लासिफिकेशंस हैं और ज़्यादा प्रोमिनेंट है उनके बारे में बात कर रहे हैं, जिन्हें एक हम कहते हैं क्लासिकल मैक्रोइकोनॉमिक्स एंड सेकेंड इज कीन्सियन मैक्रोइकोनॉमिक्स. अब जो डिस्टिंक्शन है ये बेसिकली कीन्स ने जब अपनी बुक लिखी, जो उनकी बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1936. सो इस टाइम पीरियड को ही दोनों के बीच में अंतर माना जाता है कि 1936 के पहले की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको बेसिकली क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, और जो 1936 के बाद की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको हम कीन्सियन मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं. In fact, it was the Keynes who used the term classical to refer to virtually all economists who had written on macroeconomic issues before 1936. कि 1936 से पहले जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक्स थे उनको कीन्स ने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कह के रेफर किया था. अगर आप और भी जगह देखें, जरा सा टेक्स्ट बुक्स में पढ़ें, तो एक और क्लासिफिकेशन आता है जिसमें हम कहते हैं क्लासिकल्स एंड न्यू क्लासिकल्स. सो इनफैक्ट कीन्स के अकॉर्डिंग बोथ ऑफ देम आर क्लासिकल्स. कीन्स क्लासिकल और न्यू क्लासिकल का डिफरेंशिएशन नहीं करते, बट at several occasions we find this classification, and this is based on two different time periods. So first time period, which is termed as classical time period, and it is a basically period dominated by the work of Adam Smith, David Ricardo and J.S. Mill. ये इस वक्त इनके काम ज़्यादा डोमिनेंट थे और ये लोग प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट थे क्लासिकल टाइम पीरियड में. एंड एक सेकेंड टाइम पीरियड जिसे हम बेसिकली मतलब 1930 के आसपास का टाइम पीरियड जिसे कहते हैं, इट वाज टर्म्ड एज नियो क्लासिकल पीरियड. और नियो क्लासिकल पीरियड में प्रोमिनेंट जो इकोनॉमिस्ट थे उसमें अल्फ्रेड मार्शल और एसीपी का नाम आता है. बट कीन्स डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू. According to Keynes, all those economists who has talked about before him are classical economists, because he said that their macroeconomic views, जो उनके ये क्लासिकल्स हों चाहे न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स हों, उनके जो व्यूज थे मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज पे वो ऑलमोस्ट सेम थे, एंड देयरफॉर दे वर होमोजेनस इन दैट सेंस, एंड देयरफॉर कीन्स के अकॉर्डिंग उन दोनों में कोई भी डिफरेंट नहीं है. So first of all, before talking about Keynesian macroeconomics, we will devote few lectures on classical macroeconomics, because without understanding the background, बिना हम classical macroeconomics को समझे, Keynesian macroeconomics का जो concept है, जो context है और जो relevance है उसको हम नहीं समझ सकते, and therefore it is very important to understand classical macroeconomics. Classical economists basically emphasize on the importance of real factors in determining the wealth of nations. आप एडम स्मिथ की definition याद कर रखिए. He said that economics is the study of nature and causes of wealth of nations, means the development level, कि एक कंट्री क्यों ज़्यादा डेवलप्ड है और उसके क्या फैक्टर्स हैं. तो उन्होंने बेसिकली रियल फैक्टर्स मीन्स लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इस पे ज़्यादा फोकस किया. मॉनेटरी फैक्टर्स को वो उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे. उनके लिए मॉनेटरी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं थे डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से, एंड दे वर फोकसिंग ऑन बेसिकली ऑप्टिमाइजिंग द टेंडेंसीज ऑफ अ फ्री मार्केट. मींस क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फ्री मार्केट इकोनॉमी में बिलीव करते थे, एंड दे वर इन फेवर ऑफ लेसेस फेयर पॉलिसी, कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन या गवर्नमेंट का कंट्रोल इकोनॉमिक इश्यूज पे नहीं होना चाहिए, मार्केट फोर्सेस पे नहीं होना चाहिए. So basically, as per the classicals, growth of any economy was the result of increased stocks of factors of production
and advances in techniques of production. So input है basically factors of production है जो labor, land and capital, stock of capital as well as techniques of technological development, इसी से ही growth एक economy की determine होती थी. According to them, money played a very minimum role. Only it worked as a means of exchange. मतलब लेन देन का माध्यम था. इसके अलावा मनी का कोई और भी रोल नहीं था. And therefore they believed that most of the answers of macroeconomic problems can be given without the use of money. मनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. And as I told you, they believed in laissez-faire policy. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फ्री मार्केट इकोनॉमी में बिलीव करते थे. वो कहते थे कि गवर्नमेंट का रोल मिनिमम होना चाहिए, उसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज और मार्केट फोर्सेस में अननेसेसरी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. इट शुड ओनली प्ले द रोल ऑफ इट शुड ओनली लिमिट इटसेल्फ टू regulating law and order issues, defense and some other important issues, but it should not enter into the economic activities or market forces को disturb करने में इसका रोल नहीं होना चाहिए. So if on the basis of this we can say that the classical macroeconomics have two important features. First, that classical economics or classical macroeconomics stressed the role of real as opposed to monetary factors in determining output and employment. जो आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन है, जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमी में होता है, उसमें रियल फैक्टर्स लैंड, लेबर, कैपिटल, स्टॉक ऑफ कैपिटल एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, दीज आर मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू मॉनेटरी फैक्टर्स. मॉनेटरी मनी का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है. इट ओनली वर्क्स एज ए मीन्स ऑफ एक्सचेंज, मीन्स लेन देन का माध्यम ही होती है, उसके अलावा मनी का और भी कोई रोल नहीं होता है क्लासिकल मैक्रोइकोनॉमिक्स में. And second important feature is that classical economics stressed the self-adjusting tendencies of the economy. Means they believed in free market economy, laissez-faire economy. They said that everyone would like to work for their own welfare. तो हर कोई जब अपने welfare की बात करेगा, तो ऐसे in aggregate the whole economy वो optimum strategy पे ही work कर रही होगी. And therefore they said that government policies to ensure an adequate demand for output were considered by classical economists to be unnecessary and generally harmful. So these are two important, that first, output and employment is basically determined by real forces, not the monetary factors, and they believed in free market economy, laissez-faire policy. So given these two broad assumptions and framework, how they define that how much output will take place and employment कैसे determine होगा and production किस चीज का function है, output किस चीज का function है और output कैसे determine होता है, equilibrium level में कैसे होता है, that we are going to talk about. So first of all we are going to talk about individual issues. Means पहले हम उनके प्रोडक्शन से रिलेटेड क्या क्लासिकल्स के व्यूज हैं, फिर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्या व्यूज हैं, एंड देन विल टॉक अबाउट दैट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम से क्या मतलब समझते थे. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोडक्शन. सो द प्रोडक्शन फंक्शन एज यू ऑल नो इज द रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ आउटपुट एंड द लेवल ऑफ फैक्टर इनपुट्स. मींस इट्स इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप, जो टेक्निकल एंड मैथमेटिकल रिलेशनशिप है उसी को हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं. सो as per the classical, they followed the following production function, where y is the function of k bar and n, where y is output, k bar is the stock of capital like plant, machinery, equipment and other capital stock, and n is the quantity of homogeneous labor input. Okay, this is very important. That means all labor units are homogeneous, they are same. So apart from that, in terms of production, classical economists assumed that in the short run, the stock of capital is fixed. मतलब जो supply of fixed factors है, जो stock of capital है especially, वो short run में change नहीं होती. And in this production function, it is indicated by the bar, K bar. K bar means that stock of capital is fixed in the short run. It is not changing. And the classical model further assumes that the state of technology, means level of technological development,
and the population are also constant over a period considered. जिस पीरियड में हम एनालिसिस और की बात करें उस पीरियड में वो स्टेबल है, कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है. So according to these assumptions, in the short run, output is directly related with the variations in labor input, because n is the only variable factor if you see. So output in the short run, output is a direct function of n labor input. तो जैसे जैसे लेबर इनपुट बढ़ता जाएगा आपका आउटपुट भी बढ़ता जाएगा. बट दिस रिलेशनशिप इज नॉट स्ट्रेट और दिस रिलेशनशिप इज नॉट अ लीनियर रिलेशनशिप. ऐसा नहीं कि आप लेबर इनपुट बढ़ाते जाओगे तो लगातार आपका आउटपुट बढ़ता जाएगा. Actually, there is a kind of relationship between output, fixed capital stock and labor. आप अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स पढ़ा हो तो उसी से मिलता जुलता हुआ यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप है. So as you all know that in the short run we are keeping the stock of capital fixed and we are only changing labor unit. Labor input को हम सिर्फ change कर रहे हैं. That means all other factors of production are fixed, only one input is changing. So in that case we have taken n, that is labor, and y, and then mpn, that is marginal product of labor. Okay, delta y upon delta n, that is change in output upon change in labor. So we are seeing that as we are increasing labor units, so if we have one labor unit, the output is 10. If we increase an additional labor unit, the output goes to 20 and the marginal product is 10. So if you are seeing that marginal products are same, that means जैसे जैसे हम पहली यूनिट से भी हमें 10 यूनिट का कंट्रीब्यूशन मिला था, दूसरा लेबर लगाया तो उससे भी हमें 10 यूनिट का कंट्रीब्यूशन मिला है. And this shows that there are constant returns. Then again we hire a next, so our total output goes up to 28, but marginal product means additional contribution by additional labor is 8. फोर्थ हमने जब चौथी यूनिट लगाई तो टोटल आउटपुट 33 है, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर 5 है, एंड दिस गोज ऑन. सो इफ यू सी दैट दूसरी यूनिट के बाद जब हम एडिशनल आउटपुट लेबर लगा रहे हैं तो हमारा आउटपुट तो बढ़ रहा है बट जो रेट है वो घटता जा रहा है. So means from second unit onwards, second labor unit onwards, we are getting diminishing returns because each additional labor unit is contributing lesser than the previous one. पीछे से कम, क्योंकि थर्ड का जो कंट्रीब्यूशन है वो 8 यूनिट है, वो 10 से कम है. फोर्थ यूनिट का जो कंट्रीब्यूशन है वो 5 है, जो थर्ड से कम है. But if we keep on increasing, given the level of stock, level of technology constant, level of stock of capital is constant, अगर हम लेबर लगातार बढ़ाते जाएं तो एक लिमिट के बाद देख रहे हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो घट रहा है, यानी हमें नेगेटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं. So in normal case nobody would like to get negative returns, but this table shows the relationship between output, fixed capital stock and labor. That means you cannot get there is no linear relationship, मतलब straight line नहीं है कि आप लगातार लेबर बढ़ाते जाएंगे तो आपका टोटल आउटपुट भी बढ़ता जाएगा. So इसी रिलेशनशिप को जब हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राफ के हेल्प से दिखा रहे हैं, तो जो अपर पैनल है वो टोटल आउटपुट के मूवमेंट को दिखा रहा है और जो लोअर पैनल है वो हमारे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के मूवमेंट को दिखा रहा है. सो दिस ग्राफ हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम दिस अबव टेबल, एंड रिमेंबर बेसिकली all the material which has been used in this presentation and video lecture is basically this is referred this has been taken from the Froen's macroeconomics books, Richard T. Froen macroeconomics books. So this graph is also borrowed from that books. It's not originally drawn by me, but I have taken this graph from there. So for further study, for further understanding, you can also refer Richard T. Froen book Macroeconomics. So in the upper panel you see that on the vertical axis we are taking output, on the horizontal axis we have taken employment. So जैसे जैसे हम लेबर बढ़ा रहे हैं, देखिए हमारा जब 1 लगाया था तो हमारा आपका आउटपुट 10 के लगभग था, जब आपने 2 लेबर लगाया तो आउटपुट लगभग आपका 20 के लगभग था, देन 28 के लगभग, एंड सो ऑन. आपका ग्राफ
इसी तरह आउटपुट बढ़ता जा रहा है. बट यू विल फाइंड दैट फर्स्ट this is straight line, then this is convex to y-axis. That means the rate of change is not constant. The rate of change means marginal product of labor, जो total output होता है उसका जो rate of change होता है वो marginal product होता है. So the marginal product is not constant. अगर marginal product constant रहता तो ये पूरी straight line सीधे जा रही होती कि जैसे जैसे आप labor बढ़ाते जाते एक constant rate से आपका output बढ़ता जाता. But your output is not changing by a constant rate and therefore this curve is not a straight line. आप ये रेट को आप नीचे लोअर पैनल से देख सकते हैं जहां पे हमने वर्टिकल एक्सिस पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर लिया है और हॉरिजॉन्टल पे एम्प्लॉयमेंट लिया है. तो देखिए जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है तो पहले और दूसरे से आपका सेम कंट्रीब्यूशन 10-10 यूनिट का मिल रहा था. तो दिस इज शोइंग कांस्टेंट रिटर्न्स. बट सेकंड यूनिट ऑनवर्ड्स यू आर गेटिंग डिक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स आपको मिल रहे थे 5, 3, 8. रिमेंबर थर्ड से 8 मिला था, फोर्थ से 5 मिला था और आपको फिफ्थ से उससे भी कम मिला था. सो दिस इज शोइंग डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड आफ्टर फिफ्थ यूनिट you got negative returns. So it is showing that if you keep on increasing labor, it is not necessary कि आपको हमेशा आउटपुट बढ़ता रहेगा. there will be a point जब आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, जो लेबर का कंट्रीब्यूशन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा. एंड नॉट अ सिंगल प्रोड्यूसर और फर्म वुड लाइक टू अटेन दैट सिचुएशन. सो दे वुड लाइक टू मैक्सिमाइज देयर आउटपुट एंड दिस एफ इज दैट सिचुएशन. तो कोई भी प्रोड्यूसर एफ पॉइंट के आगे, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर एफ पॉइंट के आगे प्रोड्यूस करना नहीं चाहेगा. सो I'm not talking about the equilibrium situation with the help of this graph, but I am showing the relationship between employment and output when the level of capital, stock of capital is constant. So the short-run production function which is plotted above shows the technological relationship that determines the level of output given the level of input, that is employment in our case. So as you all know that we have held constant stock of capital, level of technology, skill level of workforce as well as the population. So given this relationship you can see and you can conclude that classical economists assume that quantity of labor employed would be determined by the forces of basically if you see that in this case the output is basically in the short run as per the classical is determined by the लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट से ही आपका डिटरमाइन होता है क्योंकि लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक इन द शॉर्ट रन दे आर कांस्टेंट. बट क्लासिकल इकोनॉमिक्स आल्सो अज्यूम्ड दैट now here there is another question that output is determined by the level of employment, means amount of labor input. बट नाउ द क्वेश्चन इज कि एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, कितने जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में कैसे इक्विलिब्रियम होगा, कितना जो क्वांटिटी ऑफ लेबर एम्प्लॉयड है वो किस तरह से किन फोर्सेस से डिटरमाइन होगा. सो एज पर क्लासिकल दे अज्यूम दैट क्वांटिटी ऑफ लेबर एम्प्लॉयड विल बी डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द लेबर मार्केट. कि डिमांड और सप्लाई लेबर मार्केट में क्या है उस पर डिपेंड करेगी कि कितना लेबर एम्प्लॉयमेंट होगा. नाउ the determination of employment will be taken in another the issue of determination of employment would be taken in another video lecture. Again let me remind you that most of the material used in this presentation have been taken from Richard T. Froen books, Macroeconomics of Richard T. Froen. और आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं. एंड फॉर एनी अदर क्वेश्चन एंड क्वेरी यू कैन मेल मी एट nagendresearch@gmail.com. थैंक यू.